नमस्कार शांताताई. पस्तुरी या यूट्यूब चॅनलतर्फे आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज पस्तुरीतर्फे तुमची छोटीशी मुलाखत घेताना खरं म्हणजे मला खूप आनंद होतो आहे. हा आनंद होण्यापाठीमागे जी महत्त्वाची कारणं आहेत ती म्हणजे आपल्या दोघींमधले जोडलेले धागे. सगळ्यात पहिलं आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही आणि मी दोघीही सरस्वती भुवन कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनी आहोत. आपण आपल्या महाविद्यालयाशी जोडले जातो ते आपल्या शिक्षकांमुळे, आपल्या प्राध्यापकांमुळे. तुम्ही अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक रामेश्वर राठी सर यांच्या पहिल्या बॅचच्या विद्यार्थिनी आहात आणि मी त्यांच्या शेवटच्या बॅचची विद्यार्थिनी. खरं सांगू, आज तुमच्याशी बोलताना मला असं जाणवतंय, शिक्षकामधलं जे सातत्य असतं, पुस्तकापलीकडे जाऊन आपल्या विद्यार्थ्याला काहीतरी द्यावं, त्याला जीवनामध्ये उभं करावं, याचं जे एक स्वप्न त्याच्याजवळ असतं ना, त्याच्यामुळे अशा अनेक पिढ्या तो परस्परांशी जोडून ठेवू शकतो. शिक्षकामधल्या या सामर्थ्याला मी मनपूर्वक वंदन करते आणि तुम्हाला विनंती करते, सभूमधला तुमचा जो प्रवास आहे, मला राठी सरांकडून कळालं की PUC ते BA तुम्ही सरस्वती भुवन महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनी होत्या, मेरिट होल्डर होत्या आणि तुमच्यातली जी काही गुणवत्ता आहे त्या गुणवत्तेचं वर्णन करत असताना राठी सर कायम आवर्जून जो उल्लेख करतात तो या गोष्टीचा की आम्ही प्राध्यापक अनेक संदर्भ देत राहतो. एवढ्या सगळ्या बॅचमध्ये मला शांता ही अशी एकमेव विद्यार्थिनी भेटली की मी पुस्तक सांगितलं की ती 8 दिवसांमध्ये वाचून येत होती आणि मग त्याच्यावरती आमची चर्चा होत होती. खरोखर राठी सरांची ही आठवण मला एक विद्यार्थिनी म्हणून, एक प्राध्यापक म्हणून खूप प्रेरणादायी वाटते. आणि या निमित्तानं मी आपल्याला विनंती करेल की आपण सभूतल्या आपल्या या प्रवासाबद्दल, तत्कालीन महाविद्यालयाच्या वातावरणाबद्दल, आपल्या शिक्षक प्राध्यापकांबद्दल आवर्जून आम्हाला काही गोष्टी सांगाव्यात. धन्यवाद. या कुंदेंदु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. वृंदा जी नमस्ते, और सब श्रोतागणों और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार. आज बसंत पंचमी के दिन I extend all the best wishes and good wishes to all of you, especially to Vrinda, who has started her new channel, Pasturi. I am greatly honored by this golden opportunity to meet you, the viewers, and express my opinions, which
Vrindaji have asked for, especially my connection with my alma mater, Saraswati Bhuvan College. You know, I am almost a Maharashtrian. My knowledge about Marathi is too good as far as its understanding is concerned, but I have lost touch in speaking Marathi. So I will talk both in Hindi and English or both. You know, Vrindaji, kal or time, what we say, is a continuous process, isn't it? There is no stoppage. In that sense, it connects each and every second, or even nanosecond we can say. If we think in that manner, I started as the first student of Professor Rathi sir in Sabu College or Saraswati Bhuvan College, my alma mater, and you are the student of the last batch, as you say. But nothing has changed as far as we, the students of Rathi sir, is concerned. He has imparted the same knowledge to each and every one of us, as you say, not only in studies, but also in the way of life which we are going to, or which I have gone through so far, because you can say that I am a senior citizen now, quite past all the younger days. So that way, this journey has been quite fruitful for me, especially after becoming the devotee of Sri Aurobindo and Mother. Vrindaji, you asked me about my association with SB College. Yes, I entered SB College as a novice, as a just 15-year-old girl, not knowing Marathi, from a South Indian background. And in the college, everyone was speaking in Marathi. At that time, Sir was instrumental in removing all those fears and fill the gap of my not knowing Marathi, but the gap to be filled by showing my caliber in my studies. I picked up that, and at every stage he made me to come first in the class, and ultimately I could get a distinction also in the university. And not only from PUC to BA, he taught me even in my post-graduation university. In those times it was called Marathwada University. So there also he taught, he was a visiting professor, and he taught me, I think it is economic thought. Apart from that, he saw to it that I progress well with all-round personality while writing or even debating, and that's how my college days were there. They were such a golden days. I fully bloomed in those days. I also fondly remember my history teacher, Sri Mule, my political science teacher, Sri Joshi, and also my Principal Paul, and Vandana Paul, my English professor. All of them made me comfortable in that atmosphere as an outsider from deep south. I should be greatly indebted. I am very greatly indebted to these teachers who showed me the purpose in the life. Yeah, Saraswati Bhuvan was my
best time in my life. वा, शांतताई, तुमच्या उत्तराच्या निमित्तानं मलाही सभूचा हा एक छान प्रवास घडला. आपल्या दोघींमधला दुसरा महत्त्वाचा धागा म्हणजे आपण दोघीही श्री अरविंद केंद्रावरती साधक म्हणून, कार्यकर्ता म्हणून काम केलेल्या आणि करत राहणाऱ्या अशा आहोत. तुम्ही श्री अरविंदांच्या तत्त्वज्ञानाबाबत काही कोर्सेस केलेले होते. आम्हाला त्याची थोडी माहिती देऊ शकाल? वृंदा जी, इस प्रश्न के लिए मुझे अपना परिचय थोड़ा सा देना पड़ेगा. आई कम फ्रॉम ए वेरी ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड, हिंदू फैमिली, एंड my father and mother gave me a very strong foundation in Hindu sanskars, and especially in our families, music was a must, and shloka rendering was also a must. So since childhood, Sanskrit, music, my mother tongue Tamil, and of course English for schooling were given important to me. And when I came after my schooling to Aurangabad, I was introduced to other languages also, and there other things I picked up in the life. And now I stay at Coimbatore after so many ups and downs in the families. I was also married into, again, a very orthodox family where ladies were not allowed to go for any jobs, but I myself decided to not forget my inspiration in studies or do something within the limits which I was provided to. In that sense, Sri Aurobindo and Mother gave me a great opportunity. This also was imparted or showed by our own great Rathi sir. It was in 1983, I think, after a long gap of not very close communications. In those days we didn't have WhatsApps or not even phones, only letters, and we communicated together. And on my birthday, sir sent me a birthday wish card from Pondicherry. That was the turning point, and slowly I was introduced to all the literature of Sri Aurobindo. At the same time, I was also introduced to the great Tamil poet whose Ishtadevata was Lord Kartikeya. I could learn lots of songs from him, and also what we call Paramacharya, the great sage of Kanchi, who also has written lots of Hindu-based, of course, philosophy and spiritual literature. These three items are my music, Sri Aurobindo and Mother, and Paramacharya. These three things made me to take up such a path in the life. Meantime, my literary works also started. I had started writing both in my mother tongue Tamil and also in English about the great saints of Mahabhakta Vijaya, or the great saints who were the great devotees of Lord Krishna. They are so I wrote a series of articles. I wrote a few books on Tamil about Raman Maharshi and his contribution to the yoga of knowing oneself. And Raman Maharshi and Sri Aurobindo were
Manasik collaborators. They and Ramana Maharishi, many of even Kapali Shastri, one of the greatest devotee of mother, was once with Ramanashram only. So these great Mahans gave me a lot of insight into these works. खरंच श्री अरविंदांच्या पूर्ण योगाचा अभ्यास आपण जेव्हा करायला लागतो, त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास जेव्हा आपण करायला लागतो, त्यावेळेला जीवन खऱ्या अर्थानं कळण्याला प्रारंभ होतो. तुमच्या विद्यार्थीपणाचं कौतुक करताना राठी सर आजही सांगतात, शांताचं भाषेवर विलक्षण प्रभुत्व. जसं भाषेवर प्रभुत्व, तशी संगीताची तिला गोडी. तुम्ही लिहिता उत्तम, तुम्ही गाता उत्तम. सासरी गेल्यानंतर ज्या ज्या काही जबाबदाऱ्या तुमच्या वाट्याला आल्या, त्या जबाबदाऱ्या सांभाळत असताना तुम्ही कदाचित स्वतःचं स्वतंत्र करिअर करू शकल्या नसताल, परंतु आपले छंद मात्र आपण जोपासत राहिले पाहिजे. आणि संसारातले जे काही चढ उतार असतात, हे सगळे चढ उतार सांभाळत, खरं म्हणजे मला तुमच्याबद्दल जे काही माहिती आहे त्याच्या आधाराने मी तर असं म्हणेल, जे काही आपल्याकडे निष्काम कर्मयोगाचं तत्त्वज्ञान सांगितलं जातं, हे तत्त्वज्ञान स्वतःच्या आचरणात आणत तुम्ही स्वतःचं काम निष्ठेनं करत राहिलात. मला त्याबाबत तुमची हरकत नसेल तर एखादा अनुभव ऐकायला आवडेल. Finding a balance between the household work and your own antaratma or uski ichhaye, yeah, your own inspirations, your own wants and desires towards a spiritual attainment is always a bit difficult one. But mother had showed me at every stage her path, and whenever there can be many incidents which I can tell you, but in all those incidents there is one thing was common, that whenever there was hurdles and when my inspiration was at a very very high level or at a higher mind, and equally there were hurdles in the family matters, mother showed me how to go beyond it, and easily I could come out of those hurdles. And this all because of that integral yoga, which Sri Aurobindo always called it at my level, because integral yoga is too big a word for which I am too small a person to give any description. But at my level and at my stage, I can always say that once उस पर हट के रह गए ना, then sky is the limit. You can do. That is how I could write so many poems, or even writing books, or whatever I could do in the spiritual line, and at the same time satisfying my own inspirations, whatever I could get from all these great Mahans. That's what I'll say. Yes. आणि त्यानंतर तुम्ही जे ए मेरे वतन के लोगो हे गीत अनुवादित करून गायलेलं आहे ना, बाप रे, सगळ्या भाषांच्या प्रांतांच्या सीमा ओलांडून मनाचा ठाव घेणारं अशा प्रकारचं ते गीत आहे. ते आपण आपल्या पस्तुरीच्या श्रोत्यांना आवर्जून ऐकवूयात. चालेल ना तुम्हाला? Yes. About my Ye Mare Vatan Ke Logo, the place where I stay in a senior citizen community, one day we were talking, all these old ladies, and I sang this song for 26th January.
Someone said, we don't know Hindi, so तुम क्या गा रहे हो उसके कुछ बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे. Then I just told them the translation. They liked it, and I tried at the same time where we were just chatting with each other. I just tried 2 sentences. ए मेरे वतन के लोगों எனதாருயிர் காட்டின் மக்களே ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी எனதாருயிர் நாட்டின் மக்களே நயனத்தை நயனங்கள் கண்ணீரிலே. That's how it started. And then it's all history. I just started writing. I wanted to bring out the same emotion what the great Lataji sang it. At least, even though I am not up to her mark, I thought the emotions can always be equal. And language is not a barrier. It was everyone appreciated here in my community. Then I just recorded it and sent to my alma mater, like you, my friends, Aurobindo Society, and you have got the great heart to publish it in your YouTube channel as the first contribution, or can I say, is it a first offering to our mother on this Amrit Mahotsav of our Independence Day. This opportunity I never even dreamt in my life. Again, it is the blessings to me from the mother and Sri Aurobindo, and I offer all my gratitude to our Rathi sir, Sri Aurobindo, because I will first say Guru Gobind do khade kake lago pai. I will first prostrate before Rathi sir, and then Sri Aurobindo, Sri Mother, and my own Ishtadevata, Sri Kartikeya. शांतताई धन्यवाद. खरं म्हणजे ना, आपलं नातं इतकं सुंदर आहे की तुमचे असे औपचारिक आभार वगैरे मी मानूच शकत नाही. पण असो, हा जो काही आनंद आहे ना, तो तुमच्यासमोर व्यक्त केल्याशिवाय मला राहवत नाही. आता आपण आपल्या श्रोत्यांना ऐकवूयात तुम्ही अनुवादित केलेलं, तुम्ही स्वतः गायलेलं ए मेरे वतन के लोगो. Vrinda ji, just now I heard about the sad demise of the legendary Lata Mangeshkar ji. She might have gone, but her voice is eternal. Let this song be my dedication to her evergreen voice. Thank you, Ma. எனதாருயிர் நாட்டின் மக்களே நனையுங்கள் நயனத்தை கண்ணீரிலே தனதாருயிர் தந்த வீரர் அவர் தியாகத்தை நினைவு கூர்வீரே மறவாதீர் என்றுமே அவ்வீரரை கதைத்தேன் அவர் கதை அதற்கென்றே தனதாருயிர் தந்த வீரர் அவர் தியாகத்தை நினைவு கூர்வீரே இமயத்தை சூழ்ந்த நற்பகைவர் சுதந்திரம் சிக்கியதாபத்தில் எதிர்த்தனர் எதிர்த்தியை மூர்க்கமாய் எதிர்த்தனர் எதிரியை மூர்க்கமாய் உதிர்த்தன தம் உடலையும் மண்ணில் துப்பாக்கி முனையில் தலை உயர்த்தி உயிரையும் தானம் தந்தனரே தனதாருயிர் தந்த வீரர் அவர் தியாகத்தை நினைவு கூர்வீரே
தேசத்தில் தீபாவளி திருக்கோலம், எல்லையில் செங்குருதி அலங்கோலம். தேசத்தில் தீபாவளி திருக்கோலம், எல்லையில் செங்குருதி அலங்கோலம். மகிழ்ந்திருந்தோம் நாம் வீட்டினில், மகிழ்ந்திருந்தோம் நம் வீட்டினில். அவரோ துப்பாக்கியின் நேர்கோட்டில், மேன்மையை தாங்கிய மாவீரர். வாழ்கவே அமரர் பேராண்மை, தனதாருயிர் தந்த வீரர். அவர் தியாகத்தை நினைவு கூர்வீரே. சீக்கியர் மறவர் மராட்டியரோ, சீக்கியர் மறவர் மராட்டியரோ. கூர்காவோ அல்லது தென்னவரோ, கூர்காவோ அல்லது தென்னவரோ. பலி தரும் ஒவ்வொரு வீரனும், பலி தரும் ஒவ்வொரு வீரனும். பாரத தாயின் தலைமகனே, மலையில் பெருகிய உதிரத்தின் ஒவ்வொரு துளியும் இந்தியனே. தனதாருயிர் தந்த வீரர், அவர் தியாகத்தை நினைவு கூர்வீரே. தோய்ந்தது காயம் குருதியிலே, தூக்கின கைகள் தோக்கைகளை. கை ஒன்று பறித்தது உயிர் பத்தை, பிறகே உயிரை விட்டனரே. உயிர் பிரியும் சமயத்திலும் உரைத்தனர் நெஞ்சை உயர்த்தி. வாழ்வீர் சுகமாய் நாட்டினரே, வாழ்வீர் சுகமாய் அன்பரே. தொடர்கின்றோம் எமது பயணத்தை, தொடர்கின்றோம் இறுதி பயணத்தை. என்னென்பது அவர்தம் தேசப்பற்றை, என்னென்பது தன்மானத்தை. தனதாருயிர் தந்த வீரர், அவர் தியாகத்தை நினைவு கூர்வீரே. மறவாதீர் என்றுமே அவ்வீரரை, கதைத்தேன் அவர் கதை அதற்கென்றே. தனதாருயிர் தந்த வீரர், அவர் தியாகத்தை நினைவு கூர்வீரே. அவர் தியாகத்தை நினைவு கூர்வீரே. அவர் தியாகத்தை நினைவு கூர்வீரே. ஜெய ஹிந்த், ஜெய ஹிந்த், ஜெய ஹிந்த். जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना.